जनरली आपको एक नॉर्मल व्यू के लिए मैं बता रहा हूँ कि एडवांसिंग फेज में आपको ये क्राइटेरिया रहेगा। एडवांसिंग फेज में वैरी फ्रॉम 6 मंथ, 1 ईयर, इवन 1.5, अराउंड 2 ईयर्स तक भी एडवांसिंग फेज चल सकता है किसी भी स्टॉक का। अब रही डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज दो टाइप के होते हैं, जहाँ पे आपको जो है मिनिमम बैक साइड, सेम इसमें भी वही रहेगा कि अपवर्ड ट्रेंड मिनिमम 6 मंथ से ज्यादा का होना चाहिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज में दो चीजें, एक तो एक शार्प डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो वी शेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऊपर जाने के बाद स्टॉक सडन नीचे आता है, जिसको जनरली बाइंग क्लाइमेक्स वगैरह भी कहते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद में आपको डायरेक्टली नीचे आने के बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज बताएगा, या फिर डायरेक्टली ऊपर में ही आपको 6 मंथ डिस्ट्रीब्यूशन या 4 मंथ डिस्ट्रीब्यूशन फेज आपको वहां पे बताएगा। और यहाँ पे सेम क्राइटेरिया रहेगा एक्यूमुलेशन फेज का, वॉल्यूम्स स्टार्ट में कम रहेंगे और जब मार्क डाउन फेज के पास आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेंगे। और 200 मूविंग एवरेज आपको फ्लैट रहेगा यहाँ पे भी। एंड फोर्थ वन इज अ डिक्लाइनिंग और मार्क डाउन फेज। यहाँ पे एक्चुअली यू कैन सी अ रैपिड वॉल्यूम ग्रोथ and supply will be more than the demand, so they are not able to absorb the supply and prices will continue to slide down further. So these are the four phases we can, everybody should know while looking at the chart. I'm just explaining overall, ऐसे ऊपर से बता रहा हूँ क्योंकि इसके डिटेल और ज्यादा है अंदर। सो इट्स नॉट अ फर्स्ट क्लास में इतना आपको जो है फर्स्ट वेबिनार में आपको इतना डीप में बताना भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि somebody will get कंफ्यूजन वगैरह भी रहेगा। सो इट्स ये चीज आप एक ध्यान में रख लीजिए कि इसको आपको फाइंड आउट कैसे करना है विथ रिस्पेक्ट टू 200 मूविंग एवरेज। ये एक बेसिक ट्रिक है आपको फाइंड आउट करने की, जो लेमैन लैंग्वेज में आपको बोलते हैं, जो नए लोग हैं मार्केट में जिनको फेजेस को पहचानने में दिक्कत हो रही है, दे कैन गो अहेड विद दिस टेक्निक। Actually, the yellow line, is it 200 moving average? 200 moving average. Right. Thank you very much, हमारे Jamil bhai. Really, it's a good thing what you shown in a single slide. The 4 stages, I really appreciate for this one. The 4 stages are very much clear. What you told, the 200 DMA 200 moving averages. The first one should be in a phase of 6 months, right? And डिक्लाइन जो रहेगा ना accumulation phase से पहले जो डिक्लाइन है should be 6 months. 6 months. After falling of 6 months, then accumulation phase will start. Right, accumulation phase will start. Then advancement will be coming for a period. What will be the period of advancement? Advancement up to 2 years. 2 years भी रहेगा. 1 year to 2 year रहेगा advancing phase. 2 years. Right. Okay. What about the distribution period? How much will distribution period will be the same like accumulation. It will be around 4 to 6 month रहेगा. Even in some cases where the advancing is very 1.5 या 2 years के ऊपर है, या फिर अराउंड 200% या 150% रिटर्न दिया है, वहां पे वी शेप डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. दैट विल बी लाइक वी शेप. आफ्टर दैट द प्राइस विल ड्रास्टिकली कम डाउन, एंड देयर आई विल शो वन एग्जांपल, द स्टॉक रिकमेंडेड बाय समी भाई हियर. सो दिस इज EKI एनर्जी, राइट? सो यहाँ पे देखिए, A is called accumulation, right? Accumulation phase. After that, here is the case because I am taking is a reaccumulation, because accumulation यहाँ पे fall हुआ ही नहीं, यहाँ पे जो 6 month का था यहाँ पे है नहीं. एज अ IPO स्टॉक जैसे ही आया बढ़ता गया स्टॉक यहाँ पे. सो इट्स ऑल अ reaccumulation cases. So stage 1 reaccumulation is happened here. After that markup phase was there and second accumulation happened there, right? उसके बाद फिर मार्कअप आया और इतना शार्प रैली ऊपर हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टाइम नहीं मिला. ईच कैंडल रिप्रेजेंट 1 वीक, यानी कि 2 मंथ में एक वी शेप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और उसके बाद में साइड में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज सो मच शार्प दैट जो भी सेलर है उसको टाइम नहीं मिला अपना प्रॉपर ऑर्डर पंच करने के लिए. सो इट विल होल्ड द प्राइजेस बिलो दैट शार्प डिक्लाइन, और वहां पे एक नया डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाएगा वहां पे वो. ओके. और एक नॉर्मल अगर देखना है तो आपको ये देख सकते हैं कि अभी जैसे मैंने बोला ना टाटा एलेक्सी का, सो टाटा एलेक्सी द सेम थिंग, एक्यूमुलेशन एंड आफ्टर द थर्ड एक्यूमुलेशन नहीं हुआ यहाँ पे सक्सेसफुल, इट टर्न टू द डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज द ब्रेकडाउन इज डाउन साइड.
It is a distribution. And remember one thing, which whenever you find on a earning day a good result and it come down with gap down agar hoga, so it is a very much difficult for a stock. I'm not saying impossible, I'm saying a difficult for a stock to close that gap. It will remain for many, even 6 month, 8 month or year tak bhi aapko wo gap reh sakta hai aapko. So in general, what you talk here, so the total cycle is going for around 2 years. Right. 6 months, 6 months, 6 months, 4 months to 6 months total. It It's is a coming maximum around. right. कोई भी एक Cycle बुल is going साइकिल या बुल या बियर साइकिल चलने के लिए मिनिमम आपको 1 से 1.5 साल लगेगा आपको टोटल साइकिल होने के लिए. I have told you the maximum periods, right? No, that is true. That is true. It's very much clear. The cycle will be around 18 months to 24 months. It depends upon how the moves. The person should be with a keen eye to observe and understand it. Second matter Right. now. In each case, the 200 DMA, if it is Right. below 200 DMA, and What I is going, told, what I told you that many stocks are volatile, right? बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा volatile होता है, तो उसमें स्पाइक्स वगैरह जो नीचे आते हैं, you can ignore that one. So बहुत सारे स्मूथ स्टॉक हैं जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं and they are in the uptrend, they will show you the clear rally above the 200. अदरवाइज जैसे बहुत सारे स्टॉक हैं जैसे कि रिलायंस हो गया जो शार्प, जिसमें कमिंस इंडिया वगैरह हो गया, तो दे कैन शो यू द मेनी whipsaws in the 200 moving average. So that you can avoid. It will come by practice, right? I'm not saying that कि exactly आपको 1 इंच भी नीचे क्लोज हो गया तो you can, you don't need to consider that one. It's an indication for the trend is up or down. If 200 moving average is flat, then you can say is a in a range bound. If 200 moving average is inclined one, you can say that stock is trending. Like that I'm explaining you. Just I'm giving for a layman language के trend कैसे identify करना चाहिए. so as long as it is uptrending the 200 DMA, it means we have to hold it to get, once it is falling from there, then better to sell off and close the deal. Better you need to find out whether there is distribution or not, because sometime what happened, there is a sharp decline and after that again there you can see a bounce back from the lower sides. So you need whatever conditions I told you, volume should be less and all these things. As you can see in the slide in Tata Elxsi, you can see the whole box, जो last ऊपर का box है, volumes are very medium, and when there is a breakdown, suddenly the weekly volume is increased. If you can see, I will make it large, maybe this one, right? ये ऊपर वाले बॉक्स में वॉल्यूम्स लो रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे ब्रेकडाउन आया नीचे, अर्निंग गैप डाउन आया था नीचे, so that day last week you can see the considerable volumes are coming, right? Yes, clear. It's very much clear here. And the possibility of Inlexi, it may go a bit down now. From here, it may come into the markdown phase. ऐसा भी नहीं है कि markdown phase around 3-4 months में it can come back again. It's a good stock, fundamentally it's a very strong stock. It's no doubt about that, the stock, right? One can accumulate and wait for the period also. Otherwise, this is also a way of strategy. Yes, okay, No, I got it. Very accumulating means you don't know. I told you there is a 2 phases again, right? Stage 2 distribution, stage 1 distribution नीचे और है. So you don't know कि ये 4,000 जाएगा नीचे में या 3,000 जाएगा. You don't know. Only once it shows the sign of reversal, that means accumulation, then it is a good time to come in the stock. Yes, pretty clear. In the same way, what I recommended this about is a base on base accumulation, markup, accumulation here. So its markup phase going on. अगर ये यहाँ पे अगर ये accumulation phase के नीचे में close होता है, then you have to exit. The lower level of accumulation, you have to treat it as a stop loss. Very much clear. So there are various type of accumulations. अभी accumulation ऐसा नहीं है कि मैंने box draw कर दिया. There are a variety of accumulations. There are a variety of patterns in the accumulation that you have to learn step by step. I draw a box. It's not as simple as that you are drawing a box and you can able to identify that one, the valid accumulations and valid distribution. It will take some time.
but if you learn day by day, अगर आप अच्छे से learn कर रहे हैं, then you can also able to find out the exact distributions and accumulation zones where you can put the money. So again, it's a probability game. I'm not saying that my distribution and all these are exactly and all these things. It's a probability game. It's depend upon your skills and your keen eyes, how you are spotting out that thing. Exactly. Agreed. Probability game is there. And inshallah, hopefully in future, we are going to do this algorithm also in this, so that things will go much better, inshallah. Inshallah. Anybody else having some doubts? Any questions, Samir bhai? From सब में unmute है या mute है, पता नहीं मेरे को. मैं mute ही हूँ. जी. Let the This participants, chart, they have any sorry, these charts have to be monitored on individual stock basis or sector basis or overall index basis. Not got your exact point. What you want to ask? No, whether all the companies in a sector follow this pattern usually, or individual companies move like this. No, indexes you can follow. If you want to invest in a particular sector and that sector is having some index, you can follow the index, because index will also show you this kind of accumulations and distributions. Okay, next one. Anybody else there? I think this is a paid subscription for TradingView, right? We can't access this chart with generally like unpaid subscribers. No, you can also use that chart. I am a paid one, but you can also use that one. No issue about that one. Okay. It's a free. What additional features are there which you will not be able to use that one. But basic features are available, and it is more than sufficient for a newcomer. Okay. So for long term, what is the time frame to view the chart? Like weekly and monthly. Weekly and monthly. It's better. No. Here you have shown this example from 2011 for long term pattern. So we need to study चार्ट के बारे में हम लोग कभी और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इट्स चार्ट का जो ड्यूरेशन होता है ना, इट्स डिपेंड अपॉन द वन कैंडल. एक कैंडल अगर एक मंथ का है तो इट इज यूजुअली कॉल्ड एज मंथली चार्ट. इफ वन कैंडल रिप्रेजेंट अ वीक, सो इट इज कॉल्ड अ वीकली. So that basic we will discuss it again sometime. But एक generally याद रख लीजिए, अगर if you are going for a long term investment purpose, use a chart which is having a candle of 1 week. Okay. Thank 1 week to 1 month. you. Anybody? Should we proceed for the next one? Or we will not come back again? Yes, only 9 We minutes. have left. another. जी अभी सिर्फ 9 मिनट्स बाकी हैं. वही बोल रहा हूँ, हम लोग एक नेक्स्ट एक सेक्शन बचा हुआ है, उतना के 4 नेक्स्ट इसमें कंप्लीट कर लेंगे. ये सेक्शन में वापस नहीं आऊंगा, ये बोल रहा हूँ मैं. इफ somebody is having अभी क्वेश्चंस के लिए रख लेते हैं. हाँ वही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस के लेके रखेंगे. एक जनरल बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने एक बुक कहा था दरवाज की. सो वो दरवाज बुक पे उन लोगों ने वो कहा था कि पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं है, जस्ट यू एक्सप्लेन अस देयर के एक्चुअल बुक में है क्या. So I made there 3 slides there. So I will explain what Darvaz had done that time. So अभी इस section के हद तक किसी को कुछ question हो तो you can proceed for whatever 7-8 minutes remaining. ये नीचे का जो कलर्ड ग्राफ है वो क्या वॉल्यूम है, क्या है? Volumes है. It's a Wyckoff volume बोलते हैं इसको. If somebody want, I can give you the script. You can add that one. It's a Python script which we made. It's a Wyckoff. इसको actually क्या है, कलर किए हुए हम लोगों ने. So understand के पहले से कितना वॉल्यूम बढ़ा है, हाई वॉल्यूम है या लो वॉल्यूम है,
या एकदम ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स हैं, सो इन अ ग्लांस वी कैन डायरेक्टली नो दैट किस टाइप का वॉल्यूम यहाँ पे है। मैं आपको ये पाइथन का आपको ये नोटपैड में दे दूंगा, यू कैन इंस्टॉल दैट इन योर ट्रेडिंग। ये तो 4 फेजेस तो क्लियर हैं सबको, राइट? बहुत सो जब सारे भी हम लोग इन्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ और डाउट्स हैं आपको तो अभी पूछ लीजिए। स्पेसिफिकली अभी जो आईटी सेक्टर का डाउन प्राइस ड्रॉप हुआ है लास्ट फ्यू मंथ्स, यू थिंक जी। इट इज डिक्लाइनिंग फेज और इट इज accumulation phase? आईटी सेक्टर में देखिए मिक्स्ड है, जैसे कि अभी इंफोसिस इज एक्चुअली व्हाट आई एनालाइज इज अ डिक्लाइनिंग फेज राइट नाउ। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका, इफ पॉसिबल आई कैन शो यू देयर, 1 मिनट। ट्रेडिंग व्यू, आई थिंक वी हैव ट्रेडिंग व्यू here. See here, this is a 200 moving average, right? So if you see this one, this is a distribution and came down below the 200. ये डिस्ट्रीब्यूशन था जो ग्रीन से मैंने मार्क किया ना, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन। उसके नीचे इन्फोसिस ने 200 मूविंग एवरेज ब्रेक किया है एंड इट्स ट्रेंडिंग डाउन। सो व्हाट समी भाई ने और मैंने बताया था कि यू हैव टू बुक एटलीस्ट अराउंड, यहाँ पे आपको बुक करना चाहिए 15,000, सॉरी 1550 पे कुछ हमने बोला था ना, यहाँ पे बुक करना चाहिए, जस्ट बिकॉज 200 SMA का रेजिस्टेंस भी वहाँ पे है एंड इट्स लिटिल मच डिफिकल्ट फॉर द गो अबोव दैट 200, क्योंकि ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूशन, मेन डिस्ट्रीब्यूशन आया है यहाँ पे, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन वापस आएगा, देन अगेन इट विल गो डाउन, सो दिस काइंड ऑफ सेटअप इज देयर। तो अभी ये जो आप देख रहे थे यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज था, यहाँ पे जो नीचे स्टार्ट हुआ यहाँ पे, ये ओवरऑल यहाँ से एक्यूमुलेट हुआ था पूरा। So can it be that this phase is also an accumulation phase and it may start to rise after this? अभी यहाँ पे अगर okay, right now here is a distribution, below this will a markdown phase compulsory रहेगा, ठीक है, and around some point around 1000 and maybe around 1100 के आसपास, if shows accumulation and it try to come above this 200 SMA, then you can consider it again. Got point? Yeah. So it should move in flat with the 200-day moving average. यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, लेफ्ट साइड बॉक्स यू कैन सी द 200 मूविंग एवरेज इज फ्लैट वन। Yes. उसके बाद यहाँ पे इंक्लाइन है, यहाँ पे दैट इज अ मार्कअप फेज। अगेन यहाँ पे प्राइसेस स्टक इन अ रेंज एंड 200 SMA फ्लैट हुआ है एंड देयर वी कैन सी अ ब्रेक डाउन, गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन में होके एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज को तोड़ा है। दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग, जैसे मैंने कहा था कि जब भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन से गैप डाउन होके नीचे आ रहा है प्राइस, देन यू कैन कंसीडर इट्स अ कंपलसरी 100% मार्कडाउन फेज में एंटर कर गया है ये। नाउ इट्स एग्जांपल से तो ये तो क्लियर हो गया ना। अभी तो जो अभी एक बीच में क्वेश्चन आया था कि 200 मूविंग एवरेज को कैसे यूज करना है। एनीथिंग एल्स? आई थिंक सबके डाउट्स क्लियर हैं अभी। कई लोग पहली बार चार्ट्स देख रहे हैं तो उनको शायद अभी बेसिक्स है, वो लोग फिर से एक बार
हाँ वही, इसलिए मैं उनके आई लिए एम नॉट समझेंगे। यूजिंग चार्ट समय भाई, जी जी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैंने चार्ट पे आया वापस यहाँ चार्ट पे, बहुत सारे टाइप इसलिए के मैंने होते हैं, जी हेड एंड जी शोल्डर होगा, लाइक वी रिकवरी होगा, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स होंगे। हाँ नहीं नहीं, मैं इसीलिए मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को मेंशन करके सिंपल फेजेस बताने की कोशिश की है वहाँ पे। जी सो मेरे को भी आपने जो बोला था कि कॉम्प्लिकेटेड मत रखो क्योंकि टर्मिनोलॉजी ऊपर से निकल जाएगी लोगों की फिर, जी जी जी, सो मैंने जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल रखा है इसको। सही है। सो उसके बाद अगर कोई है तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं कि हम लोग कि उसमें और डीप में जा सकते हैं, बट पहली क्लास में अगर मैं सब बोल दूंगा तो फिर समझने में बहुत मुश्किल होगी फिर। बिल्कुल। सो लेट इट कम बैक टू द स्लाइड्स। हो गया समय मेरे ख्याल से, किसी को और नहीं है। देख सेकंड अपना एक लास्ट सेशन आपका निकोलस डरवास के 3 स्लाइड है, आई विल एक्सप्लेन दैट वन अगर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे लेना है आपका तो। हाँ इंशाल्लाह, फिर किसी दिन रखिए, बाकी का भी कवर कर लेंगे। और जब तक आप लोगों को कुछ डाउट है पहले वाले सेशन के, तो फिर आप लोग जब भी इसको क्लियर कर सकते हैं। राइट, Somewhere 1 minute 20 seconds approximately बाकी है। जी हाँ जी हाँ, बस अभी आज का सेशन तो खत्म हो गया है। कोई लास्ट क्वेश्चन है तो आज क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना फिर अभी हम उसको इंशाल्लाह क्लोज कर देंगे। आई डोंट थिंक अभी कोई क्वेश्चन है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई, आप के चीज टाइम निकाल के आप बताएं सबके लिए, और फर्दर जो भी पेंडिंग है इंशाल्लाह उसको भी कवर कर लेंगे। अगर जिसे भी अगर डाउट भी यहाँ पे भी नहीं है तो दे कैन आस्क इन द ग्रुप आल्सो। अगर यहाँ पे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाद में कुछ डाउट्स वगैरह आए तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप। श्योर, जी अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह। Thank you, Jamil bhai. Thank you, Hami bhai. थैंक्स एवरीवन, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। Very useful session. Inshallah, thank you very much for everybody for participating as well as the speakers. Really जज़ाकल्लाह खैर। Jamil bhai, if you can put the name of the book on the group, तो वो डाल सकते हैं आप लोग पहले। हाँ, ग्रुप में ऑलरेडी मेंशन किए थे, फिर से एक बार वो मेंशन कर दें। जी करता हूँ फिर।